Welcome to the channel My Home My Study. Today we are going to solve chapter number 1 distributional maps from 9th standard geography. Moving to the exercise, first one give reason why following sentences are right or wrong. हमको क्या करना है इसमें रीज़न भी बताना है कि right और wrong क्यों है. ठीक है. The main aim of distributional maps is to show location. So the answer will come wrong. The main aim of distributional map is not show location of area but the distribution of a mentioned feature in a given area. Next question. In choropleth map, only one value is assigned to the sub-administrative unit. Right. Choropleth maps are distributional maps where the data for the different geographical variable is represented by either shades of the same color or by different colors. The collected data regarding the variables to be represented is assigned to singular units and the color is assigned as per the distribution, with lighter color representing lower values and darkening with higher values. Next question is, in choropleth maps, colors or tints do not change according to the values of the variable. Answer wrong. Choropleth maps are distributional maps where the data for different geographical variables is represented by either shades of same color or by different colors. The next question. Choropleth maps are used to show altitudes. Answer wrong. Choropleth maps are used to show the distribution of geographical variables among different administrative units and as such do not utilize continuous data. Isopleth maps represent altitudes in better manner. Next one, isopleth maps are used to show population distribution. Answer wrong. The data regarding population is collected on the basis of sub-administrative units. Choropleth maps are better to represent data regarding population distribution. Next question. 6.1. In dot method, every dot should have an appropriate scale. Answer right. Every dot represents a certain value of the data that is being represented in the map. 7th one, isopleth maps are not made using iso lines. Wrong. Isolines are lines which joins the place having the same data on a map, like lines joining places having equal rainfall. The ranges are between two isolines are often colored to represent the data diversity which creates isopleth maps. Next question. Distribution of various geographical elements can be shown using dot method. Answer wrong. The dot method can be used to present various geographic element but does not present a true picture when used for those geographic variables which are continuous in nature, like altitude, rainfall, temperature or population of density. Next question. Answer in brief. First one, explain the use and types of distributional maps. So the answer is there in your textbook. See page number 1. स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मार्क किया है, आप यहाँ से कॉपी कर लो और ये जो ट्री डायग्राम दी है इसको भी आपको ड्रॉ करना है. ये तीनों मेथड लिखना है. फिर जो डॉट मेथड की देखो ये पूरा लिखना है आपको. ठीक है. उसके बाद आपको लिखना है कोरोप्लेथ मेथड और आइसोप्लेथ मेथड. ये दोनों पैराग्राफ मार्क जहाँ तक किया है वहाँ तक के लिखना है. अगर आपको इसे बेटर आंसर मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कोरोप्लेथ मेथड एंड आइसोप्लेथ मेथड. कोरोप्लेथ मेथड में आएगा द डिफरेंट जोग्राफिकल वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर शेड्स ऑफ द सेम कलर और बाय डिफरेंट कलर्स. Isopleth method. The data for the variable under study is demarcated by isolines, which are lines joining the places having the same value. Next, continuous or varying data can be used for mapping purposes. Isopleth method, only continuous data is used. Next, third point, administrative boundary is defined data boundary and hence continuous data may be misrepresented. Administrative boundaries do not define data boundary. Data boundary is defined by isolines. Smallest and largest values of given data are used to classify the data ranges into acceptable
classes. Isopleth का fourth point, places having same data value determine the drawing of isoline. The range is determined by the difference in these isolines. Fifth point of choropleth method, color gradient or pattern allows map interpretation. Deeper the color, higher the value of data under study. Isopleth method. Fifth point, placement of lines allows map interpretation. Closer the isoline, steeper the data distribution. Sixth point, mainly used for data like population, density, distribution, etc. Sixth point of isopleth method, mainly used for continuous data like temperature, rainfall, altitude, etc. Third question, isn't the method which is best suited to show the distribution of population is in a region. So first we have to write the definition of population. Population refers to the number of people residing in clearly demarcated geographical area, often for purpose of study. This demarcated area is one of the basis of administrative division. Thus the number of people living at given point of time in a country, state, village, etc. First one, dot distribution maps uses dots to represent pre-calculated values of chosen variables. The value of each dot is calculated based on the highest and lowest recorded population data. Dots used should be uniform in size corresponding to their index. Dot placement is dependent on presence of natural and man-made features like river, road, etc. This method makes it easy to read maps and allows for a precise interpretation of people distribution in a given area. Second point, choropleth maps. The population data of different geographical areas is represented by either shades of the same color or by different colors. Every sub-administrative region has one assigned value. Data is divided in classes after ascertaining the highest and lowest value. With each classes getting a particular shade, the shade becomes darker with increasing values of the given variables. Administrative boundaries play a vital role in this form of a map. From the above discussion, it is evident that dot distribution maps are ideal for representing population distribution of an area as the data collected is defined by administrative boundaries. Only with increasing density, choropleth maps should be used to represent a clearer picture. Now see the question number 3. Which method will you use for the following information? First one, taluka wise wheat production in the district. Students, you have to copy down the answer from here. Only I am reading that method. So the dot distribution maps take into account absolute values. Next, distribution of the altitude of the land in the district. स्टूडेंट्स, आपको पूरा आंसर कॉपी करना है, सिर्फ मैं इसमें मेथड ही रीड कर रही हूँ, तो पूरा मेथड के साथ साथ पूरा आंसर आपको लिखना है. तो इसमें कौन सा मैप्स यूज होगा? आइसोप्लेथ मैप्स रिप्रेजेंट एल्टीट्यूड्स इन बेटर मैनर. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन द स्टेट. आंसर, द डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स टेक इनटू अकाउंट एब्सोल्यूट वैल्यूज. ठीक है, तो आपको पूरा आंसर लिखना है, सिर्फ मैं इसका मेथड ही पढ़ रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया. सो सीधा आंसर इसमें भी आएगा कोरोप्लेथ मैप्स. ठीक है, तो आपको पूरा आंसर लिखना है, सिर्फ मैं इसका मेथड ही रीड कर रही हूँ. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट. तो ये वाले आंसर में भी आएगा आइसोप्लेथ मैप्स. ठीक है, ये पूरा आंसर आपको कॉपी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, study the population distribution map of Kolhapur district and answer the following. First one, which method has been used to show the distribution of population in the district? So the dot method has been used to show the distribution of population in the given Kolhapur district map. पूरा आंसर आपको कॉपी करना है. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द डायरेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डेंस टू स्पार्स. सो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आपको पूरा आंसर कॉपी करना है. यहाँ से मैं पूरा रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आपको खुद से कॉपी करना है यहाँ से. द पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज वन मूव टूवर्ड्स द वेस्टर्न एंड साउथर्न एरियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन शोन बाय द लार्जेस्ट सर्कल, विच प्लेस इज दैट? तो द पॉपुलेशन इज प्रेजेंट इन द कोल्हापुर सिटी विच इज पार्ट ऑफ द खारवीन तालुका.
ठीक है, ये आंसर पूरा कॉपी करना है आपको। नेक्स्ट 4th वन, विच तालुका हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन। तो इसमें आएगा तालुका गगन भावड़ा हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कोई भी वीडियो से किसी की भी वीडियो से आपको रेडीमेड आंसर्स मिल जाते हैं तो आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आंसर बाय हार्ट करना है, लर्न करना है, उसको समझना है। अगर आपको लेसन का भी वीडियो चाहिए पूरा तो मुझे कॉमेंट करके पूछो, मैं एक लेसन एक्सप्लेन करके भी डालूंगी वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।